Good morning, my dear students. Class 3rd. Myself, Miss Alima Sheikh. Students, today we are going to learn chapter number 18. Look before you leap. So students, everyone just open your English Balbharti textbook and take out page number 37. Chapter number 18. Look before you leap. Student, what does it mean? Look before you leap. It means that to make sure that everything is alright before doing something important which you cannot revert to think of the consequence of one's action before taking them. Students, in short, we can say that look before you leap means we should think carefully before we do anything. Students, from this lesson we are going to learn some message. This lesson is going to give us some message, or we can say knowledge. Right students? This lesson is going to give us a moral. So here, look before you leap का मतलब होता है छलांग मारने से पहले देखो. What does it mean? छलांग मारने से पहले देखो का मतलब क्या है? सोच समझकर कदम उठाओ. मीन्स हम कुछ भी काम करेंगे उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए उस चीज के बारे में, समझना चाहिए और फिर उस काम को करना चाहिए. लुक बिफोर यू लीप का मतलब है छलांग मारने से पहले देखो. और वो हमें मैसेज क्या दे रहा है? ये टॉपिक सोच समझकर कदम उठाओ. हमें कुछ भी काम करने से पहले उस चीज के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद हमें वो काम करना चाहिए. So students, now everyone understood what is the meaning of look before you leap. So here students, first I am going to read the first paragraph, right? And then afterward I will explain you in a line wise so that you can understand the whole lesson, right? So here the first paragraph. Long, long ago, there lived two little frogs in a pretty little pond, colorful. Water lilies grew in the pond. Fishes darted about and tiny insects buzzed around. The pond was full of life. The two frogs were very close friends. They had plenty to eat in the pond. All the day long, they played about jumping from lily pad to lily pad and diving headlong in the pond. They were the happiest little frogs in the world. So student, now I had read the first paragraph. So now I am going to explain you in a line wise. So here the first line. Long, long ago, there lived two little frogs in a pretty little pond. Students, again I am reading the first line. Long, long ago, there lived two little frogs in a pretty little pond. Students, there were two frogs were there, right? They are living in a pretty little pond. Pretty means beautiful. In a beautiful pond, the two frogs were living, right? जैसे कि long long ago,
बहुत समय की पहले की बात है। There lived two little frogs. दो मेंढक रहते थे। कहाँ रहते थे? Pretty pond. Pretty pond means, pretty means beautiful. In a beautiful little pond. एक छोटे से खूबसूरत से तालाब में रहते थे। कौन रहते थे? दो मेंढक। राइट स्टूडेंट्स? Colorful water lilies grew in the pond. Students, if you see in the picture, in the page number 37, you can see two frogs, right? And some flowers are there. That flower name is lily. So here, there are colorful lilies grew in the pond. Means colorful lilies grow in the pond. जैसे कि आप देखोगे कि कलर कलर के लिलीज है वो तालाब में, वहाँ पर वो तालाब में लिलीज उगते हैं. ग्रो मीन्स उगते हैं. राइट? सो हियर कलरफुल वाटर लिलीज ग्रू इन द पॉन्ड. Fishes darted about and tiny insects buzzed around. So students, these lines mean that in that pond there are so many fishes darted. Darted means moved quickly, or we can say suddenly. Means the fishes moved quickly about and tiny insects were there. Means a small insects buzzed around. So buzzed means making a sound like like this way the insects were making sound. जैसे कि उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी. डार्टेड मीन्स यहाँ वहाँ वो लोग मूव हो जाते. जैसे आप जानते हो फिशेस बहुत स्पीडली मूव हो जाती है. राइट? और टाइनी इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट थे. इंसेक्ट मीन्स कीड़े. राइट? वो बर्स्ट करते थे. बर्स्ट मीन्स एक साउंड निकालते थे. जैसे आपने देखा होगा मक्खी कैसे साउंड निकालती है, ऐसे साउंड होता है ना. तो पर्टिकुलरली वहाँ पर इंसेक्ट जो कीड़े थे वो तालाब के अंदर वो लोग साउंड करते थे. और जो फिशेस थी वो स्पीडली मूव हो जाती थी. राइट? कहाँ पर था ये सब चीज़ें? तालाब के अंदर. सो हियर स्टूडेंट, डार्टेड मीन्स moved quickly and suddenly. Burst means making a sound, continuous humming sound. So students, everyone understood this line? Okay. Now move to the next line. The pond was full of life. Students, this sentence indicates that the two little frogs, they were living happily in that pond, because in that pond there are so many fishes, insects that they can eat. For that reason the sentence is saying that the pond was full of life for the two frogs. जैसे कि ये जो लाइन है, द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ लाइफ, मीन्स वो तालाब उन दोनों फ्रॉग के लिए पूरी जिंदगी है. क्यों? क्योंकि उस तालाब में बहुत सारे मच्छी है और बहुत सारे इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े, बहुत सारे कीड़े हैं कि वो लोग पूरी ज़िंदगी भर उस चीज़ को वो लोग खाएंगे और वो लोग उस पॉन्ड पे खुशी खुशी रहेंगे. फुल ऑफ लाइफ मीन्स पूरी जिंदगी. द टू फ्रॉग्स वेर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. द सेंटेंस इंडिकेट दैट द टू फ्रॉग्स वेर वेरी बेस्ट फ्रेंड्स. दे आर बेस्ट फ्रेंड्स टू ईच अदर. जैसे कि दोनों मेंढक एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त थे. स्टूडेंट्स, एज यू नो इन दिस स्टोरी देर आर टू फ्रॉग्स. जैसे कि आप जानते हो इस कहानी में दो मेंढक हैं. राइट? द टू फ्रॉग्स वेर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. वो दोनों बहुत ही अच्छे और पक्के दोस्त
थे. They were best friends. They had plenty to eat in the pond. Means both the frogs having plenty food to eat in that pond. Now here the food means fishes and insects, because the frogs are going to eat fishes and insect, right? जैसे कि आप जानते हो, ये दो फ्रॉग्स क्या खाते हैं, ये दो मेंढक क्या खाते हैं, मच्छी और इंसेक्ट. इंसेक्ट मीन्स कीड़े, राइट? तो इस पॉन्ड में, इस तालाब में बहुत सारे फिशेस हैं और कीड़े हैं, इंसेक्ट, राइट? फिशेस मीन्स मच्छी. तो ये तालाब में बहुत सारे मच्छी है और कीड़े हैं कि वो लोग बहुत खा सकते हैं. All the day long, they played about jumping from lily pad to lily pad and diving headlong in the pond. All the day long, they played about jumping from lily pad to lily pad and diving headlong in the pond. So student, the full day means the whole day. The two frogs were playing jumping from lily pad to lily pad. Students, here the lily pad means one of the floating leaves of a water lily. Students, again I am saying lily pad means lily's leaves, which is called lily pad. So they were jumping from leaves to leaves and diving headlong. Students, diving headlong means diving into water with the head going into water first and then rest of the body. Diving head in the pond. Students, जैसे कि आप जानते हो, वो दो मेंढक बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे. कैसे इंजॉय कर रहे थे वो लोग? लिली पैड मीन्स लिली के पत्ते. एक पत्ते से दूसरे पत्ते में वो लोग जस्ट जंप मार रहे थे फुल डे और इंजॉय कर रहे थे. देन आफ्टरवर्ड फ्रॉम diving headlong. स्टूडेंट्स, एंड diving headlong मीन्स उन्होंने फर्स्ट अपना हेड मीन्स सर, वो फर्स्ट सर पानी में डुबाते थे और उसके बाद पूरी बॉडी. वैसे वो लोग कहाँ खेल रहे थे? तालाब के अंदर. सो स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड diving headlong means diving into water with the head going into water first and then the rest of the body. जैसे मैंने अभी आपसे कहा, वो लोग पानी में डुबकी कैसे मारते थे? पहले वो अपना सर पानी में डालते थे और उसके बाद पूरी बॉडी. They were the happiest little frogs in the world. So here students, the both frogs were thinking that we are the happiest frog in this world. जैसे कि वो दोनों फ्रॉग सोचते थे कि पूरी दुनिया में हम लोग ही सबसे ज़्यादा खुश है इस दुनिया में. So student, I had completed the first paragraph. Now students, move to the next paragraph. So now student, the second paragraph. The frogs loved the rainy season, but the rainy season does not last forever. The rains stopped and the weather became hot. Still, there was a lot of water and life in the pond. There was nothing to worry about. In winter, the frog friends found cozy little places at the edge of the pond. They spent most of their time sleeping and resting. So student, now I have read the second paragraph. Then afterward I will explain you in a line wise. So here the very first line.
The frogs loved the rainy season. Students, the frogs like the rainy season most. The frogs means both the frogs. They both like rainy season most. जैसे कि फ्रॉग्स को रेनी सीजन बहुत पसंद था. आप जानते हो रेनी सीजन में हमें क्या दिखता है? फ्रॉग्स, राइट? वी सी फ्रॉग्स इन द रेनी सीजन मोस्ट, राइट स्टूडेंट्स? फ्रॉग्स को रेनी सीजन बहुत पसंद है. बट द रेनी सीजन डज नॉट लास्ट फॉर एवर. Students, last forever in this sentence it means that the rainy season is not for the whole year. Right student? The rainy season is not for the whole year. Students, as you know, rainy season is only for 4 months. And then afterward there is a winter season. Right? And the winter season is for 4 months. Then afterward there is a summer season. There will be summer season, and that also for 4 months. Right students? Students, जैसे कि आप जानते हो रेनी सीजन पूरे साल भर के लिए नहीं होता है, राइट? रेनी सीजन सिर्फ 4 मंथ्स के लिए होता है और उसके बाद विंटर सीजन होता है और उसके बाद समर. हर सीजन 4 मंथ्स के लिए होता है. तो ये सेंटेंस जो कह रहा है बट द रेनी सीजन डज नॉट लास्ट फॉर एवर, जैसे कि रेनी सीजन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो सिर्फ कितने मंथ के लिए रहेगा? 4 मंथ्स के लिए. राइट स्टूडेंट? द रेन इज स्टॉप्ड एंड द वेदर बिकेम हॉट. स्टूडेंट्स, द रेन स्टॉप्ड मीन्स द 4 months is completed and now the rains stopped. And the weather became hot. Students, as you know, after the rainy season there is a winter season, but between the rainy season there is hot. Sometimes the weather is become hot, and afterward it will be winter season. Students, जैसे आप जानते हो बारिश स्टॉप्ड हो गई, उसके बाद विंटर सीजन होता है. बट विंटर सीजन और बारिश के बीच में थोड़ी सी गर्मी होती है. जब भी बारिश स्टॉप हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा गर्मी लगता है और उसके बाद कौन सा सीजन स्टार्ट होता है? विंटर. वेदर मीन्स मौसम, हॉट मीन्स गर्मी. जैसे कि बारिश रुक गई और मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया, हॉट हो गया. Still there was a lot of water and life in the pond. जैसे कि बारिश रुक गई तो भी वो पॉन्ड में, वो तालाब में बहुत सारा पानी था. Still there was a lot of water means बहुत सारा पानी उस तालाब में था. जैसे कि बारिश रुक गई फिर भी वो तालाब में क्या था? पानी था. And life in the pond. जैसे कि लाइफ इन द पॉन्ड का मीन्स है द 2 frogs were living happily because still in that pond there is a water. जैसे कि उस तालाब में अभी भी पानी था. बारिश रुक गई फिर भी वो तालाब में पानी था और वो दोनों खुशी खुशी उस तालाब में रह रहे थे. There was nothing to worry about. Students, this line indicates that the both frogs were living happily. Worry means it doesn't matter. Means the rain has stopped. It doesn't matter for both the frogs because there is still water in that pond. जैसे कि आप जानते हो बारिश रुक गई फिर भी पॉन्ड में मीन्स तालाब में बहुत सारा पानी था, इसीलिए वो दोनों वरी नहीं थे. देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बारिश रुक गई क्योंकि उनके तालाब में बहुत सारा पानी था. इन विंटर द फ्रॉग फ्रेंड्स फाउंड cozy little places at the edge of the pond. Students, after the rainy season, there is a
winter season. The frog friends found cozy. Students, cozy means comfortable and warm place. Both the frogs found a comfortable and warm place at the edge of the pond. So students, as you know, after the rainy season, जैसे कि आप जानते हो, बारिश के मौसम के बाद कौन सा मौसम होता है? ठंडी का, राइट? तो दोनों फ्रेंड्स, कौन फ्रेंड? फ्रॉग. फ्रॉग मीन्स मेंढक. दोनों मेंढक को बहुत ठंडी लग रही थी. क्यों? क्योंकि कौन सा सीज़न था अभी? विंटर का. तो वो दोनों को बहुत ठंडी लग रही थी. स्टूडेंट्स, इफ़ वी फील cold, what we use? Yes, we use blanket, sweater, right students? In the winter season we use blanket, sweater, right? जैसे कि ठंडी का मौसम होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, स्वेटर यूज़ करते हैं, राइट? बट व्हाट अबाउट द फ्रॉक्स? पर फ्रॉक्स क्या यूज़ करेंगे? तो वो लोग एक पर्टिकुलर प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पर उनको गर्म लगे. दे फील कंफर्ट एंड वार्म. ऐसे वो लोग एक प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पे उनको गर्म लगे. तो वो कौन सी प्लेस है? डीप इनटू द सॉइल. डीप इनटू द सॉइल मीन्स मट्टी के अंदर. वो लोग ठंडी के मौसम में कहाँ जाते हैं? मट्टी के अंदर. डीप इनटू द सॉइल, राइट? लिटिल प्लेसेस एट द एज ऑफ द पॉन्ड. जहाँ पे वो तालाब था उसी के किनारे में, जहाँ पर सॉइल है. सॉइल मीन्स मट्टी. उसके अंदर वो लोग जाकर बैठते थे. कभी विंटर सीजन में. इन विच सीजन? इन द विंटर सीजन. In winter, the frog friends found cozy little places at the edge of the pond. Students, as I told, cozy places means comfortable and warm places, right? Now, they spend most of their time sleeping and resting. Students, both the frogs, in the winter season, they spend most of their time in sleeping and resting. ज़्यादातर तो विंटर सीजन में वो लोग क्या करते थे? रेस्ट करते थे. रेस्ट मीन्स आराम. रेस्टिंग मीन्स आराम. स्लीपिंग मीन्स सोना. तो स्टूडेंट्स, वो लोग कहाँ जाके रेस्ट करते थे और आराम करते थे? डीप इनटू द सॉइल. मट्टी के अंदर वो लोग सो जाते थे और आराम करते थे. कौन से सीजन में? यस, इन द विंटर सीजन, राइट? इन द विंटर सीजन they sleep and rest, right? So now student, I had completed the second paragraph, right? Now move to the next paragraph. So now student, the third paragraph. Soon it was summer. Now the days became very, very hot. With the hot sun blazing in the sky, the pond began to dry. Without water, the lilies dried up. There were very few insects to be found. The frog friends were worried. Do you think the whole pond will dry up? So student, the very first line of the third paragraph. Soon it was summer. Means, first of all, we had seen the rainy season. Then afterward, winter season. Now, the last season in this story is the summer season. So now student, the summer season start. जैसे कि आपने देखा था इस कहानी में, सबसे पहले कौन सा सीज़न था? रेनी सीज़न. मीन्स बारिश का मौसम. उसके बाद विंटर सीज़न मीन्स ठंडी का मौसम. और अभी कौन सा सीज़न है? समर सीज़न. मतलब गर्मी का मौसम शुरू हो गया. Now the days become very, very hot. So students, as you know, the summer season started and the days become very hot. जैसे कि समर सीज़न चालू हो गया और पूरा दिन क्या होता है? बहुत हॉट होता है. हॉट मीन्स गर्मी. हमें समर सीज़न में क्या लगता है? गर्मी, राइट? Now the days become very, very hot.
With the hot sun blazing in the sky, the pond began to dry. So students, it's a summer season. With the hot sun blazing. Students, here blazing means the weather is very hot. The weather is too hot in the sky. The pond began to dry. Means the pond was fully dry because of the hot weather. जैसे कि आप जानते हो कौन सा मौसम है, गर्मी का, तो जो पॉन्ड था मीन्स तालाब वो पूरा ड्राई हो चुका था. ड्राई मीन्स सूख गया था. वो जो तालाब है वो पूरा सूख गया था. Without water, the lilies dried up. So here students, because of the summer season, there is too hot, right? And the pond was dry. So without water, the lilies also dried up. जैसे कि तालाब में पानी भी नहीं था, तो जो लिलीज थी, जो फ्लावर्स थे, लिलीज फ्लावर्स, वो भी पूरा ड्राई अप हो गए थे. ड्राई अप मीन्स सूख गए थे. क्यों? क्योंकि तालाब में पानी नहीं था. और रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ द समर सीजन. जैसे कि आप जानते हो कौन सा मौसम था, गर्मी का, इसीलिए पूरा पॉन्ड सूख गया था. मीन्स पूरा तालाब सूख गया था. और बिना पानी के जो फ्लावर्स थे, जो लिली फ्लावर्स थे, वो भी सूख गए. विदाउट वाटर द लिलीज ड्राइड अप. द फ्रॉग फ्रेंड्स वर वरीड. So here students, both the frogs were worried. Worried means thinking that something bad might happen. Students, worried means thinking that something is going to be happen bad with us. Like that, both the friends were worried. Means both the frogs were worried. जैसे कि दोनों फ्रॉग्स मीन्स मेंढक चिंतित हो गए थे क्योंकि फुल पॉन्ड वो क्या हो गया था, ड्राई हो गया था. मीन्स पूरा तालाब वो क्या हो गया था, सूख गया था. इसीलिए दोनों जन क्या हो गए थे, चिंतित कर रहे थे. दोनों जन क्या कर रहे थे, चिंता में थे कि अभी हम लोग क्या करेंगे. डू यू थिंक द होल पॉन्ड विल ड्राई अप. Here one of the frog is saying that to the other frog, do you think the whole pond will dry up? क्या आपको लगता है कि पूरा पॉन्ड ड्राई अप हो जाएगा? ऐसे एक फ्रॉग दूसरे फ्रॉग से कह रहा था. So students, today I had explained you chapter number 18, look before you leap, page number 37. The next part of this story that I am going to explain you in the next lecture. So students, now I am going to give you the notes. Before giving the notes, students, did everyone understood the story about two frogs? Right? I had explained you page number 37. The next part means page number 38. That I am going to explain you in the next lecture. So everyone, now open your combined book. I am going to give you the notes. So students, now I am going to give you the notes. So everyone just open your combined book and take out your pencil. Students, the pic which is flash on your mobile phone is the page number 21 of your combined book number 2. Unit 2, chapter number 18. Look before you leap. Students, as you know, I had explained you only the page number 37. And the next page, page number 38, means the part 2 of the story that I am going to explain you in the next lecture. So the homework is you have to write the new words 3 times. That much only the homework is there for today. So the question number 1, learn and write the given words 3 times. Students, as you know, in the left hand side, there are some new words are there that you have to write 3 times. So students, let's see which are those words. Lilies, burst, cozy,
age, blazing, traveling, plenty, distance, circular, salt, hesitate, speciality, occurred, leap. So students, this all words you have to write 3 times. This is the homework for today. Students, if you have any doubt regarding the explanation or about the homework, you can call me or WhatsApp me on my personal number. So students, thank you for watching the video.